Hi, I'm Debajyoti Biswas. I'm an alum of SPJIMR, PGDM 2016, and I was Isam's mentor for the Abhyudaya program. And it's such a lovely experience meeting Isam after a decade. So it's really overwhelming and a very emotional and nostalgic experience for me to see him after all this while, all grown up into a smart, young, vibrant man. When I bumped into him, it took me a while to really recognize him, because the last time I saw he was a very small, quiet kid, and it really helped me realize that such a long time has passed and he's grown so much and done so much in life. It was such a nice program where all the mentors met their Sitaras, and it was done so beautifully and artistically. There was a very nice cultural program, and that was the first time I met him, and I could gauge from my first meeting that he would be a very sincere and dedicated kid, and that's something that he demonstrated over the course of time during our meetings. Because when I used to go to his place, he would be very eager and keen to go through the lessons and each session. And no matter what his struggles were, or even if he was finding it difficult to cope up with what we were discussing, he had the intent and the desire to push himself. And that was such a life-changing experience for me. And I say that because now I'm an academic and I'm a faculty and I teach students, but I guess those were the little stepping stones that kind of planted the seeds of an academic. When I met him, and I realized that in a small way you can make an impact, you can change someone's lives, someone's perspective towards education. And his interest, his effort, despite his struggles, was something that moved me. And I felt that yes, this beautiful teacher-student bond is so universal. It transcends boundaries. It transcends the trappings of a physical classroom. Because back then we didn't have a formal classroom where we used to have conversations at his home, and no matter the setting, it was that connection, his intent and desire to learn, and my intent to teach something, whatever I knew. Now when I look back, it was such a profound experience, and I'm really glad that SPJIMR has such initiatives, and it's heartwarming to see how big it has grown now when I come here on campus. I'm really hopeful it's going to change so many lives in the city of Mumbai. So really a proud alum. ना मेरे को डिटेल में याद नहीं, पर जब मिला था तो सबको मिल रहे थे भैया, तो मैं सोच रहा था मेरे को कौन मिलेगी, समझ में नहीं आ रहा था क्या है। तो फिर मैंने आ गए हूँ, तो मैंने हाँ ठीक है। मेरे को लगा कि मैं इनके मतलब नए थे तो कैसा इंटरेक्ट करूँ, तो इनकी पर्सनैलिटी थी ऐसी कि मैं समझ नहीं पाया कि मैं होएगा क्या नहीं हम लोग का, कि मतलब बात कैसे करूँ। तो मैं पहले डरता था ये, तो हम लोग का थोड़ा हुआ, तो 1-2 मीट हुआ हम लोग का। फिर उसके बाद थोड़ा मेरे को पता चल गया कि है, मतलब कर सकते हैं, मतलब थोड़ा मतलब कैसा समझाओ अभी कि हो सकता है। तो हम लोग मीट किए, घूमे, हम लोग घूमते थे भी। अगर थोड़ा लेक्चर हो गया ना तो थोड़ा टाइम मिलता था ना, तो हम लोग वॉक पे चले जाते थे, तो कुछ खा लेते थे साथ में, ऐसा। तो बहुत सारे है ऐसा, तो हम लोग का हो गया था, मतलब कनेक्ट तो हो गए थे हम लोग फिर एक दूसरे से, मतलब अच्छे से। और इनको गाने का शौक था, अभी भी है वो, तो सॉन्ग मेरे को सुनाते रहते थे। अभी भी है ना अभी भी है एकदम। तो सॉन्ग का भी प्रैक्टिस मेरे को बोलते थे कि ऐसा करना चाहिए, सॉन्ग से जो सुर लगता है वो कैसा ऊपर नीचे, वो सब मेरे को सिखाते थे। तो इस सॉन्ग का इंटरेस्ट था क्योंकि अभी ही इज इनटू फिल्म मेकिंग, फिल्म प्रोडक्शन, तो तभी से उसका इंटरेस्ट था। और अभी तो ही इज बिकम एन एक्सपर्ट आई गेस। और मुंबई में हो तो अभी यू आर इन द राइट प्लेस। आई एम श्योर बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे। और हु नोस, कभी एक थिएटर में बैठ के सिनेमा देख रहा हो तो क्रेडिट्स में दिखेगा इसाम शेख है, अभी भी है बहुत सी पिक्चर में। मुझे वो मूवी देखना है, तो मतलब
बहुत खुशी और गर्व होगा। ब्लॉकबस्टर पिक्चर थी सितारे ज़मीं पर, ओह अच्छा, उसमें है अरे क्रेडिट। वाह, सितारे जमीन पर, Yes. मतलब एप्ट, वेरी गुड। या मैंने वो मूवी देखी नहीं, लेकिन नाउ दैट आई नो आई विल मेक द पॉइंट टू वॉच। नहीं, वो मम्मी के साथ भी उनका अच्छा हो गया था। मम्मी तो अभी भी याद कर रही थी, बोले कि जे बार तो उनको घर पे लेके आ मेरे को, तो बोले थे कि अगर बात होती तो लेके आ, घर पे आना चाहे तो लेके आ जा। घर मम्मी से भी उनका अच्छा था, मम्मी भी कुछ भी बना के देती थी खाने के लिए, कुछ लेके आती थी पीने के लिए। एक बार तो उनको सर पे वहाँ पे वो लग गया था। अच्छा, वो मुझे लगता रहा था, हाँ अभी याद तो आया। उनको लग गया था, तो उनका सर दुखने लग गया था, तो तभी डर गई थी मम्मी, बोले क्या हो गया ऐसा अपनी वजह से, तो ऐसा हो रहा था। तो पर फिर मम्मी से भी अच्छे थे, मम्मी से ही बहुत जल्दी हो गए। अपनी मम्मी के ऐसा ही ट्रीट करते, मम्मी भी मेरे ऐसा ही ट्रीट करता, बेटा ऐसा, तो मम्मी से भी अच्छा था। ये मुझे अभी याद आ रहा है कि जब भी जाता था जब बहुत वार्म और वेलकमिंग, जैसे मतलब ऐसा लगता था किसी मतलब परिवार वालों के साथ ही बैठ के टाइम बिता रहे। तो एक बहुत अच्छा कंफर्ट जोन था। एक दो मीटिंग के बाद ही लगता था कि ठीक है, जैसे अपना छोटा भाई है उसके साथ वक्त बिताने के लिए जा रहा हूँ। और हम लोग पढ़ाई करते थे, उसके बाद थोड़ा ऐसे ही वॉक करते थे, ऐसे बातें करते थे, उसका क्या इंटरेस्ट है, कैसा क्या शौक है। और तब मैं भी यंग था, मैं भी स्टूडेंट था, तो मैं भी अपने मतलब पैशन शौक ये सब शेयर करता था, म्यूजिक एंड एवरीथिंग। या सच फॉन्ड मेमोरीज। और नहीं सीरियसली तो नहीं किया, पढ़ाई भी हम लोग मस्ती में करते थे, हो जाती थी। तो एक्टिविटीज़ तो बहुत किए थे, कि कुछ मेरे को नेम्स दिए थे कि बोले तुम इसका क्या बनाओगे, अगर इसके ओनर रहे तो कुछ फॉसिल वॉच, अच्छा पेंटा सैंडीज, ये सब मेरे को नेम दिए थे। तो अगर ये सब ये थिंग नहीं रहती तो तुम अगर इसके ओनर रहते तो उसका क्या क्रिएट करते थे, मतलब नेम दिए, मतलब फॉसिल सैंडी जब ब्रांड है, तो ये इन्होंने मेरे को ये नाम दिए थे। अगर तुम ये पेन ड्राइव नहीं बनाते तुम इसका क्या बनाते थे। तो ये सब मेरे को याद है थोड़ा कि दिए थे, तो उन्होंने हाँ फिर समझे थे हाँ थोड़ा है करके वो वाला। कुछ चीजें मैं भूल गया हूँ, लेकिन अभी वो जब याद कर रहा है मुझे थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है कि हम लोग ऐसे थोड़ा इम्प्रोवाइज करते थे अबाउट डिफरेंट थिंग्स। और सिंस आई वाज इन अ बिजनेस स्कूल इन बिजनेस एजुकेशन, मुझे भी थोड़ा एंटरप्रेन्योरियल आइडियाज ये सब मैं थोड़ा सा एक्सप्लोर करता था। तो प्रॉब्ली that's probably the source of this discussion कि I was trying to see कि अगर उसको बिजनेसमैन बनना है तो कौन से दिशा में जाना है, कौन सा प्रोडक्ट एक्साइट करता है, कौन सा बिजनेस एक्साइट करता है। तो क्योंकि होता है ना कि कुछ अर्ली साइंस रहता है कि you're naturally inclined towards something, and अगर you share it with an elder brother or a sibling, you think out loud, तब वो निकल के आता है कि हाँ मुझे इसमें इंटरेस्ट है। तो ये मुझे लगा था कि थोड़ा अर्ली ऑन ये खुल के बातें हो जाए तो उसको भी ये पता चलेगा कि उसको एक्चुअली क्या चाहिए, क्या किस दिशा में इंटरेस्ट है। तो ये एक अच्छा कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन था कि हाँ ये सब मतलब मैथ और इंग्लिश के बाहर भी जो दुनिया है उसमें तुम्हें क्या करना है, जाके क्या बनना है। तो और मुझे आज ये जान के इतनी खुशी हो रही कि फिल्म्स में प्रोडक्शन में काम कर रहा है, तो उसको इसमें डेफिनेटली पैशन था and he's found his way. I'm very confident that he's going to succeed. So for me, I think one of the biggest learnings was that now that I'm a teacher myself, कि when you're teaching someone, when you have a student, you have to understand the student. You have to empathize where he or she is coming from, what he or she wants, because it's not a one-way delivery. If you have something to teach, you teach a concept and then you just forget about it. So I think spending time with him helped me understand him better, and that helped me kind of tailor the lessons accordingly. That created a bond, that created a connection. So that's something that I do now with students. When I'm teaching, I try to pause and try to get the pulse of the class, right? Talk to students, and I think that helps me become a better teacher. And it's work in progress, still a long way to go, but I think my interaction with Isam is something that really shaped me at that point in time. I mean, initially I took some time to understand
what his needs are, where he needs more hand holding, where he needs more help. So spending that time, having that patience, really understanding him, that's something I think that made me a more sensitive and patient person. Because if you don't have that patience, you'll think, okay, I have to teach for 1 hour, I'm just going to do these things, and irrespective of whether the person gets it or not, my job is done. But my experience with him was something that really shaped me, that molded me, and thanks to him, because he showed the effort, he showed the interest, and it's always a two-way thing. Because when you're teaching a student, when you're interacting with a student, he or she has to show that interest, that motivation. So that was there, but I knew there was some places where I got stuck or needed more help. But once I formed that bond with him, it was smooth sailing. So yeah, understanding it's a human equation, the teacher-student relationship, and that's the biggest learn. ऐसी एक ही चीज़ याद थी इनकी, गाना तो मेरे को जो सिखा रहे थे वही, कि कभी मैं सुनता हूँ ना जो सॉन्ग सुनता, मैं भी वो सॉन्ग सुनता हूँ ना, तो मेरे को याद आता है कि हाँ, कि मेरे को बताए थे कि ये सुर हमदर्द अरिजीत सिंह। ओके। वो गाना उस टाइम पे बहुत फेमस था। हाँ, तो वो गाना अभी मैं सुनता हूँ ना, तो मुझे याद आता है कि हाँ, ये सुर ऐसा नहीं लगना चाहिए, ऐसा लगना चाहिए, मेरे को सिखाए थे, तो ये मेरे को याद है। और अरिजीत सिंह में सुनता हूँ ना, तो मेरे को याद आता ही इनकी, क्योंकि सॉन्ग में इंटरेस्ट था जब उसके बाद ही मुझे सॉन्ग्स में इंटरेस्ट आना चालू, इनकी बातें। तो मैं पहले सॉन्ग नहीं सुनता था इतने, तो अरिजीत सिंह ने चालू किया, उसके बाद ऑल सिंगर्स को एक्सप्लोर किया मैं, तो ये इनसे एक चीज़ अडैप्ट किया मैंने, सॉन्ग्स का। Yeah, I think Abhyudaya is a program that differentiates SPJIMR from any other business school, because it gives you an opportunity to sensitize, students towards societal needs, towards needs of different sections of society, and that is something very important to inculcate compassion as a leader. Because in the classrooms of a business school, there are a lot of things that we learn, concepts, techniques, presentations, interactions. But leadership is about managing people, about understanding people's needs, showing direction, showing the way. And Abhyudaya is a program that really molds you as a person. Because back then, when we used to go to different Sitaras, places, we used to see the contrast. On the one hand, you have high rises in Mumbai, on the other hand, you have Dharavi. So you're sensitized to the stark contrast, the heterogeneity, in a big metro like Mumbai, and that really makes you aware of what the grassroots problems are, and that's something that stayed. And I would say this is a program that's helped me become a more sensitive person, more understanding person. आप बहुत बड़े हो गए हो, लेकिन फिर भी मुझे लगता है चॉकलेट खाने का एज आपका अभी भी है। चॉकलेट इज टाइमलेस एंड एजलेस। तो grow big and fly high, do very well in life, and when you become a famous film director or cinematographer, do invite me to your premiere. I will go there with all the pride in my heart and tears in my eyes.